Hello everyone. So up to the last lecture we discussed about the algebraic conditions of solving a linear pair. Okay, in case of unique solution, or I should say whenever solution exists. Okay, now we know how to solve a linear pair of equations. We have three methods. We have substitution, we have elimination, we have cross multiplication. Okay, so students, today we will discuss about solving some equations that are not linear actually. Okay, we know what is the general form of a given pair, given a linear pair. Okay, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So today we will be discussing some equations that won't be linear, or I should say that won't be in the general form initially. Okay, but we can make them linear by just substitution. Okay, by just normal substitution. Okay, so today's our first topic is equations reducible to a linear equation. Okay, so equations, our topic is equations reducible to a linear pair. Equations reducible to linear या टू अ लिनियर पेयर. अब हम इक्वेशंस को लिनियर बनाएंगे. ओके, इनिशियली हो सकता है हमारे को जो इक्वेशंस मिले वो लिनियर ना मिले, बट हम उसको लिनियर बना लेंगे. ठीक है. नाउ let us take some equations that are not linear initially, but we will make them linear. Okay, question number 1. See, 8x minus 9y is equal to 6xy, and similarly the second equation is 10x plus 6y. 10x plus 6y is equal to 19xy. 19xy. C, ax plus by, but here constant is not there. Here xy product. Okay, so these equations are not linear, but we will make them linear and solve them. Okay, see how. First of all, what I'm gonna do, see, this is xy. Okay, this term is making it non-linear now, because we know in linear equations x and y should have power 1 1. Okay, so can I just divide this equation by this xy? What I am doing in this equation, I am dividing by xy, और यूं समझ लो कि इस xy को मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ. इस xy टर्म को मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 8x माइनस 9y अपॉन में ये xy डिनोमिनेटर में जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा xy इस तरीके से कुछ. ओके, एंड इस इक्वल टू 6. तो यहाँ पर इसमें केवल 6 बचा है. नाउ सिमिलरली अगर इस इक्वेशन के साथ भी ऐसा ही किया जाए तो यहाँ भी ये xy आ गया डिनोमिनेटर में, और यहाँ बच गया केवल 19. मैंने क्या करा है, मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड, आप ऐसा समझ लो कि xy से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ xy से डिवाइड हो गया तो ये डिनोमिनेटर में xy आ गया, और जब यहाँ xy से डिवाइड करा तो xy से xy कट गया तो 6 बच गया. ओके, सिमिलरली मैंने यहाँ भी यही करा है, दोनों साइड xy से डिवाइड करा है. नाउ अब अभी भी कोई लीनियर थोड़ा बन गई है. नाउ I can separate the denominator. Okay, so let us separate the denominator. So I am separating the denominator. Is equal to 6, and here also when I will separate the denominator, it will become like this, is equal to 19. Okay, also see, x will get cancelled out, y will get cancelled out. So this equation will become 8 upon y minus 9 upon x is equal to 6, and this equation will become like 10 upon y plus 6 upon x is equal to 19. Now in this equation we have xy, but in the denominator, and we know for making them linear pair,
or making them in general form of linear pair of equations, because these are not linear right now, because here yes we can say x have power 1, but in the denominator it is have power 1. If I take x in the numerator, it will be of x to the power -1, ये x का इनवर्स बन जाएगा. ओके, बट हमने पहले ही कहा था जो जनरल फॉर्म है उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x और y की पावर 1 होनी चाहिए. यहाँ पर अगर मैं x को न्यूमरेटर में लाता हूँ तो x की पावर -1 हो जाती है, विच इज नॉट लीनियर. ओके, टू मेक देम लीनियर, what I am gonna substitute, see carefully. I am assuming 1 upon x as another variable, let us say u. तो assuming 1 upon x is equal to u, मैंने 1 upon x को u मान लिया, एंड सिमिलरली 1 upon y को assume कर लिया एक और वेरिएबल से v. ओके, 1 upon x को u कहा, 1 upon y को v कहा. नाउ अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करूं, क्लियर, तो क्या बन जाएगा? एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ यूजिंग इन 1 and 2 या सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 and 2, सब्स्टिट्यूटिंग इन equation 1 and equation 2. When I will substitute in equation number 1 and equation number 2, see, it is 8 upon y. 8 upon y means 8 into 1 upon y, na? 8 upon y is nothing but 8 into 1 upon y. So I can write 8 into 1 upon y, and 1 upon y is v. So it can be written 8v. Similarly, 9 upon x is nothing but 9 into 1 upon x. 9 into 1 upon x. So 1 upon x is u. So in the place of 1 upon x, I can write u. Clear? And it is equal to 6. Let us say this is equation number 3. And also, अगर मैं इस इक्वेशन इसके अंदर भी ऐसे सब्स्टिट्यूशन करूं सिमिलरली, तो 1 upon y is v. Okay. So 10 upon y is nothing but 10 into 1 upon y. Clear? We know now 10 upon y is 10 into 1 upon y. Same thing now. So similarly what I am doing here, 10 into v plus 6 upon x means 6 into 1 upon x. So it can be written as 6u is equal to 19, and let us say equation number 4. Now you can observe here that these two equations are linear. Now they have become linear. ये दोनों linear बन चुकी हैं. देख लो आप, ax plus by is equal to c. बट क्या हुआ, यहाँ तो वेरिएबल ही चेंज कर दिया आपने एक्स वाई की जगह u भी ला दिए. कोई बात नहीं, हम यहाँ दोनों को सॉल्व करेंगे, हम u और v की वैल्यू निकाल लेंगे और दोबारा ये इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, so that we can get x and y. Clear? So now what we are doing, we are solving these two equations. Now to solve these two equations, now we have methods. Now we are not bound to use any particular method, but we will always use elimination. Okay, as I told you in the last class only, we will use elimination. Now it is -9 and it is +6. So to make the u coefficients equal, I am multiplying equation number 3 with 2 and multiplying equation number 4 with 3. Clear? So, and then what I will do, I will add the two equations. Why I will add? Because it is negative and it is positive. Because they are of opposite sign, when their coefficients are equal, and when I add these two, they will get cancelled out. Clear? So multiplying equation number 3 by 2 and adding it to equation number 4 after multiplying by 3. ओके, ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, बाकी आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर
3 को मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 2 से, और इसमें ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करके किससे, 3 से। क्लियर। नाउ क्या बन जाएगी नई इक्वेशंस, अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 2 8 जा 16v माइनस 2 9 जा 18u is equal to 2 6 जा 12, and this equation will become when after multiplying with 3 it will become 30v plus 6 3 जा 18u is equal to 19 3 जा 57. Okay, let us add these two. When I will add these two equation, u's coefficient will be cancel out, 18u cancel out, 30 plus 16v is 46v, and 57 plus 12 it will become 69. So the value of v is 69 upon 46. Okay, they can cancel out with 23 table. Okay, 23 3 ja is 69, and 23 2 ja is 46. So the value of v is 3 by 2. Okay, now after calculating v, now we have to calculate u. Okay, so calculating u now. Now for calculating u, we can put this value of v in either of these two. Okay, elimination method. Now putting in equation 3, putting in equation number 3, so it will become 8 into the value of v is 3 by 2 minus 9u is equal to plus 6. So it is your plus 12 minus 9u is equal to 6, or minus 9u is equal to 6 minus 12, that is minus 6. 6 minus 12 is minus 6. Okay, ये 12 उधर जाके राइट हैंड साइड में minus 6 बन जाएगा, 6 minus 12 minus 6, और the value of u is minus 6 upon minus 9. Minus minus will get cancel out, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9. So the value of u is 2 by 3. Now we have calculated u and v, but what we have to calculate, हमको क्या calculate करना था, actually हमको calculate करना था x और y. तो again आप ने जो सब्स्टिट्यूशन एज्यूम किया था उसमें वैल्यू पुट करो. सो 1 अपॉन x वॉज u ना, सो 1 अपॉन x शुड बी इक्वल टू 2 by 3, एंड 1 upon y should be your 3 by 2. Now here we can write the answer. What is the value of x? I can reciprocate both the sides or just cross multiply, same thing. So 2x is equals to 3, or the value of x is 3 by 2. Similarly 3y is equal to 2, or the value of y is 2 by 3. Hence the required answers are 3 by 2 and 2 by 3. Okay, you can check the answer by putting in the given equations. Okay, now let us take more questions. Okay, question number 2. See, simple one. 5 upon x plus 1 upon y is equal to 2, and 6 upon x minus 3 upon y is equal to 1. Clear?
here it is mentioned that x not equal to 0 and y not equal to 0. Why? You know, if x becomes 0, this term will be undefined, so we have to write that x and y cannot be 0 0. Okay, now student, it is very simple now. Yes, you can see that they are not linear. Okay, in order to make them linear, I have to substitute 1 upon x as u, 1 upon y as v. Then I will solve for u and v, and then I will again substitute in 1 upon x and 1 upon y, and I will calculate the xy. Now see, I have used this in the previous question. So don't you think I can solve directly also here? Okay, I know they are not linear, but then also I can solve them direct. Why? Just observation is needed. Okay, see students, if I multiply this equation with plus 3, so it will become 3 upon y. It will become 3 upon y, na? And here it is also minus 3 upon y. So if I add directly, 3 upon y and minus 3 upon y can get cancelled out. Okay, so yes, I can do this thing. Okay, I can eliminate y here directly. Or if you want to use the concept used in the last question, assuming 1 upon y u, 1 upon y v, 1 upon x u, you can also do that. Okay, so I'm solving it directly. Okay, you can solve it directly. So 5 upon x plus 1 upon y is equals to 2. Say it is your equation number 1, and your equation number 2 is 6 upon x minus 3 upon y is equals to 1. Now what I am doing, I am multiplying equation number 1 with 3. Equation number 1 multiplying with 3 and adding it with equation number 2. Now 5 upon x, when multiplied with 3, it will become 15 upon x plus 3 upon y, and 3 to the 6. I have to multiply in the both of sides, na? Similarly here 6 upon x minus 3 upon y is equal to 1. When I will add these two, they will get cancelled out. 15 upon x plus 6 upon x, denominator are same. I can write 15 plus 6, 21 upon x, and 6 plus 1 is 7. So here 21 upon x is equal to 7, or if x goes in the right hand side, so it will become x is equal to 21 upon 7. ये x इधर गया, ये 7 नीचे आ गया. So the value of x is plus 3. See how simply we can solve it. Okay, they are not linear, but here we can use the method, the elimination directly. Okay, now calculating y, just put in any of the two. Okay, putting in 1, say, so it will become 5 upon x, so 5 upon 3 plus 1 upon y is equal to 2, or 1 upon y is equal to 2 minus 5 by 3. 1 upon y is equal to 3. 3 to the 6 minus 5, it is 1 upon 3. Okay, so the value of y is 3. I just reciprocated both the side. Clear? So here x is equals to 3 and y is equals to 3 is our answer. You can check your answer. See, it is 5 upon 3, it is 1 upon 3. 5 upon 3 plus 1 upon 3, 6 upon 3 equal to 2, correct? If you put here 3, 6 upon 3, 2, 3 upon 3, 1, 2 minus 1, 1. Okay, so yes, the required answers are x is equal to 3 and y is equal to 3. Okay, take some more question. Question number 3rd.
see 2xy upon x plus y is equal to 3 by 2, and the next is xy upon 2x minus y, xy upon 2x minus y is equal to minus 3 by 10, minus 3 by 10. Here it is given that x plus y and 2x minus y not equal to 0. You know why they are not equal 0, okay? Because if x plus y is 0, in that case it becomes the denominator becomes 0, and it is not possible. So I am writing here x plus y should not equal to 0, and also 2x minus y should not equal to 0, है ना? ये क्वेश्चन में गिवन होता है, कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है. ओके, सो let us solve it. Okay, now if I simplify this, okay, what I will get? Cross multiplying. Okay, if I cross multiply, it will become 3 into x plus y and 2 to the 4xy. इस इक्वेशन में मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, एंड इस इक्वेशन का क्या होने वाला है? -3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस वाई से, सो इट विल बिकम -6x, -3 इंटू 2x -6x, एंड -3 जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3y. ओके, एंड 10 इंटू एक्स वाई इज 10xy. सो sorry, it was 4xy. 2 to the, when I multiplied crossly, it is 4xy. Now 3x plus 3y is equal to 4xy. ये क्या हुआ? ये तो कुछ वैसा ही बन गया जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था. देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही कुछ बन चुका है वापस. ओके, तो करें इसको सॉल्व. चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है ये, सेम. ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है. If I take xy in the denominator, if I take xy in the denominator, it will become 3x plus 3y upon xy is equal to plus 4, and here it is minus 6x plus 3y upon xy is equal to 10. If I separate out the denominator, directly I am writing it will become 3 upon y plus 3 upon x. Okay, एक बार x से x कट गया, एक बार y से y कट गया, is 4, and say it's equation number 1. And similarly it is minus 6 upon y plus 3 upon x. I just separate the denominator, okay, is equal to 2. Now assuming 1 upon x as u, you can assume any variable, okay, you can assume p, q, a, b as you want. 1 upon x is equals to u, and 1 upon y is equal to v. See, 3 upon y is nothing but 3 into 1 upon y. So substituting in equation number 1 and equation number 2, I can write 3 upon y is 3v plus 3 upon x is 3u is equal to plus 4. Say equation number 3, and this equation is minus 6v plus 3u is equal to 10. Say equation number 4. Now we can subtract these two equations, because here directly the coefficients of u are same. Okay, so directly we can subtract equation number 3 minus equation number 4. I'm writing directly here. Okay, 3u will get cancelled out. Okay, 3v and minus 6v, they will get added, because 3v ये sign change होगा तो it will become positive. So 3v plus 6v will become
9v, 3u will get cancel out, and 4 minus 10 will become minus 6. Okay, so the value of v will be minus 6 upon 9 or minus 2 by 3. Okay, so the value of this is minus 2 by 3 v. Now putting in equation number 3. Okay, so 3 into minus 2 by 3 plus 3u is equal to 4. 3 will get cancel out. Minus 2 when goes in the right hand side, it will become plus 2. So 4 plus 2 will become 6, or the value of u comes out to be 6 upon 3, that is 2. So we got u and v. बट क्या हमको u और v चाहिए थे? नहीं, हमको चाहिए थे x और y. तो अगेन okay, I'm using the space. It is 1 upon x. We assumed it as u, so is equal to 2, and 1 upon y we assumed as v, so the value of v is minus 2 by 3. Okay, so the value of x is gonna be 1 upon 2. Just cross multiplied. Okay, x there and 2 comes here. Similarly the value of y is, if I reciprocate both the side, यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, मैंने यहाँ दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर दिया. Also the value of y is minus 3 by 2. So the required answers are 1 by 2 and minus 3 by 2. Clear? Concept clear? Okay. स्टूडेंट यहाँ पहले ही लिखा हुआ है x प्लस वाई 0 नहीं हो सकता, तो आप ये ना सोचें कि सर x और y 0 0 भी तो हो सकते हैं, बिकॉज 0 प्लस 0 अगेन 0 होगा. क्लियर? तो आंसर्स आर x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू minus 3 by 2. ओके, see this question. 5 upon x plus y minus 2 upon x minus y is equal to minus 1, and 15 upon x plus y plus 7 upon x minus y is equal to 10, and we have to solve for x and y. See, this is very important kind of question. अभी हम इस तरह के क्वेश्चन को एक एक बार सॉल्व करके देख लेंगे. उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हमारे को ऐसी इक्वेशंस बनने को मिलेंगी. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स से हम ऐसी इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ सी हियर 1 अपॉन एक्स को सब्स्टिट्यूट करने से कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर अब एक्स प्लस वाई कंप्लीट है, यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर एक्स माइनस वाई है. तो हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ही कुछ एज्यूम कर लें. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ही एज्यूम कर लेंगे. तो लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 upon x minus y is equals to v. Okay, and putting in the given equation. Okay, substituting in given equation. So just use this kind of substitution. Substituting in given equations. Now 5 upon x plus y is nothing but 5 into 1 upon x plus y. Okay, so I can write 5 into u minus 2 into 1 upon x minus y, that means 5v is equal to minus 1. Say it equation number 1, and similarly it can be written as 15u, because 15 upon x plus y means 15 times 1 upon x plus y, plus 7 upon x minus y means 7 times x minus y, that is 7v is equal to 10. That's your equation number 2. Now solving equation number 1 and 2 by elimination method. What we have to do, just multiply equation number 1 with 3.
so it will become 15u. It is also 15u. After subtracting, u will get cancelled out and the value of v will be calculated. Okay, so writing, I am directly solving 1 and 2, solving equation 1 and equation 2. Okay, so just multiply this with 3 and I just multiplied both the side in equation number 1 with 3, and in equation number 2 I am writing directly 15u plus 7v is equals to 10. Okay, when I will subtract these two, they will get cancelled out. Minus 6v and minus 7v will become minus 13v. 6 and 7 13. ठीक है, and minus 10 minus 3 it is also minus 13. So the value of v comes out to be minus 13 upon minus 13 or plus 1. Okay, so the value of v is plus 1. Putting in any of these two, so putting in equation number 1 say, so it is 5u minus 2v. So in the place of v I am substituting 1 is equal to minus 1. So the 5u is, it is minus 2. When goes in the right hand side it will become plus 2. So it is 2 minus 1 plus 1. Okay, writing directly plus 1. So the value of u is 1 upon 5. Now we got u and v, but हमको क्या u और v कैलकुलेट करने थे? नहीं, हमको तो फाइंड करने थे x और y. अगेन यूज, सो 1 upon x plus y, we assumed it equal to u na, so just put again. So it is similarly 1 upon x minus y was 1, so it is 1. Now if I cross multiply, see what I will get. X plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. Oh, now I get two more equations, but this time they are directly linear equation. Okay, and we know how to solve this kind of equation. Okay, क्या किया जाए? ऐड कर दिया जाए दोनों इक्वेशन को, so that y will get cancelled out and the value of x will be your answer. Say it is equation number 3 and equation number 4. Adding, so equation number 3 plus equation number 4, y will get cancelled out. X plus x 2x, 5 plus 1 6. So the value of x is 3. Now putting in 3, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं, so I will get the value of y. So yes, 3 plus y is equal to 5 और y is equals to 2. यहीं करेंगे इसको तो कंप्लीट. y is equals to 2. नए पेज से नया क्वेश्चन. So yes, our answer are 3 and 2. You can check your answers by substituting in the given equation. See, 3 plus 2 5, 5 upon 5 1. Similarly 3 minus 2 1, 3 minus 2 1, 2 upon 1 2. So it was 1 minus 2 minus 1. Satisfied? Similarly 3 plus 2 5, 15 upon 5 plus 3, 3 minus 2 1, so 7 upon 1 7. So 3 plus 7, it is plus 10. Okay, so yes, both equations are satisfying. That means our answers are correct. Clear? So students, these 4 questions were, in these 4 questions we saw the equations that were not linear actually, but we have made them linear and then solved. Okay, so I will give some question of this type for you, but उससे पहले एक और टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वो टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. स्टूडेंट्स, मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको फर्स्ट क्लास में हमने एल्जेब्रिक कंडीशंस को डिस्कस किया था. ओके, एंड एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन वाज a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. Okay,
For infinite many solution, algebraic condition was a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So we will solve some questions that will be based on directly what? Condition for solving. Okay. So our next topic is questions based on condition of solving. So यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं condition of solving. Questions based on condition of solving. Okay, यहाँ लिख लेते हैं questions based on condition of solving equations, solving linear pair of equations. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज फॉर given pair, let us say pair is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. For unique solution, what was the condition? याद है एक टेबल बनाई थी हमने. The condition was this one. Okay. Similarly for no solution, the condition was a1 upon a2 was equal to b1 upon b2, but this ratio does not equal to c1 upon c2. And for infinite many solution, इस condition पे based question करेंगे. Infinite many solution, the algebraic condition was a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Also the geometrical meaning of this condition, this pair is intersecting line, this pair is parallel lines, and this pair was your coinciding lines or overlapping lines. Now start करते हैं question. First, for what value of k, for what value of k 2x plus 3y, ये कॉमा है केवल, है ना. For what value of k 2x plus 3y is equal to 4 and k plus 2 times x plus 6y is equal to 3k plus 2. 3k plus 2 will have infinite many solutions. Will have infinite many solutions. Infinite many solutions. Students, for solving this kind of question, first of all आपको ये condition याद होनी चाहिए और उसके बाद आपको बस simple calculation आनी चाहिए. Okay. Now, first of all I am writing the two equations. 2x plus 3y is equals to 4, and the next equation is k plus 2 times x plus 6y is equal to 3k plus 2. Now say equation number 1, say equation number 2. Now we know the equations have infinite many solutions. Question is asking in this way, for what value of k, k की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे वो इन्फाइनाइट होंगे, या यूं कहना चाहिए कि ये दोनों लाइंस होंगी वो ओवरलैपिंग होगी. एक ही बात है. ओके. सो फॉर इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वी नो दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. दैट मीन्स a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, ये तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए. ओके. सो जस्ट use this condition here. What is the value of a1 plus 2? Okay, coefficient of x in equation number 1. What is the value of a2? K plus 2. See, the x coefficient is a2 na, so this k plus 2 complete is the coefficient of x here. Okay, don't get confused. The value of b1 is 3, the value of b2 is 6. ओके. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जनरल फॉर्म में तो है ही नहीं, जनरल फॉर्म में तो ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए. सी, अगर ये दोनों यहाँ भी हैं, ओके, और मैं इन दोनों को यहाँ भी लेके आता हूँ तो इन दोनों के साइन ही तो चेंज होंगे, मतलब ये दोनों नेगेटिव ही तो बनेंगे. ओके. इन दैट केस c1 अपॉन c2 में माइनस से माइनस कट जाएगा,
माइनस से माइनस कट जाएगा ना, C1 भी नेगेटिव, C2 भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल गेट कैंसिल आउट। तो मैं इसको डायरेक्टली ही लिख देता हूँ 4/3k+2। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप इसको इधर लाएं दोनों को, तो दोनों की तरफ आपको माइनस लगाना पड़ेगा और माइनस से माइनस काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर उधर भी रखते हैं तो फिर ये मान के चलो कि हमने माइनस माइनस नहीं काटा और इस तरीके उसको दोनों को राइट हैंड साइड में एज्यूम कर लिया, ओके, C1/C2 को। नाउ जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। नाउ these three things are equal, so first of all I will take these two. 2/k+2 is equal to 3/6 or 2/k+2 is equal to 1/2. Okay, so cross multiplying I will get k+2 is equal to 2 to the 4 and the value of k is +2. So by comparing these two I get the value of k 2. Okay, it also satisfies for this. See, if I put k is equals to 2 here in this one, so 3 to the 6, 6 plus 2 8, 4/8 what 1/2 and also here 1/2, ठीक है। तो हम इसको इक्वल करके दिखा देंगे। ऑल्सो 4/3k+2 at k is equals to 2, 3 to the 6 plus 2 8 is equals to 1/2. So yes, we can say here for k is equals to 2, k की वैल्यू जब 2 है, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, these all are equal to 1/2. देखो सब जगह 1/2 आ रहा है। So yes, our answer is k is equals to 2. Hence k is equals to is our solution. Clear? So it was very basic one. Okay, we just used the condition of infinite solutions. See students, one question is for you. Okay, you have to solve this one. Question is, for what value of p the following system of equations have infinite many solutions? Have infinite many solutions. For what value of p? Actually there are two variable, okay, so I should write here for what value of p and q. Okay, see, I am changing something. For what values of p and q. इस क्वेश्चन को भी मैं ही करा दूंगा उस केस में। ओके, देयर आर टू वेरिएबल। आपके लिए फिर दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p and q द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इट इज द क्वेश्चन, ओके, एंड आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। The question is 4x, the system of equations is 4x plus 5y is equal to 2, and the next equation is 2p plus 7q times x plus p plus 8q times y, and this complete is equal to 2q minus p plus 1.
2q minus p plus 1. These are the two given equations and we have to calculate the values of p and q for which the given system have infinite many solutions. Okay, no problem at all. Okay, see, say it is equation number 1, say it is equation number 2. Now first of all you have to check what is the value of a1 here, +4, b1 +5. c1 अगर यहाँ ले आते हैं तो +2, उधर भी रहने देते हैं तो भी उसको हम कह सकते हैं 2. ओके, अगर यहाँ ले आते तो -2 हो जाता, अभी भी वो वहाँ पर 2 है, बिकॉज c1 को भी अगर इन दोनों को नेगेटिव बनाता भी हूँ तो भी द रेशो c1/c2 इज गोना बी कैंसिल आउट. ओके, हियर इट इज a2, इट इज b2 एंड इट इज c2. नाउ वी नो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना. ये क्वेश्चन यूजुअली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरीके का, जिसके अंदर 2 वेरिएबल होता है और कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे दी जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 चेक हो जाता है. एक तो आपको कंडीशन की चेक हो जाता है और एक और अभी जो चीज क्या चेक हो जाता है वो अभी आपको पता चलेगा. 4/2p + 7q इज इक्वल टू 5/p + 8q एंड c1/c2 2/ इस कंप्लीट को लिखेंगे 2q minus p plus 1. Okay, see students, when I am solving this, first of all I am taking these two equal. So 4/2p plus 7q is equal to 5/p plus 8q, and since these two are equal, also these two are equal. Okay, एक मिनट, ये -p था, 2q minus p plus 1. ओके, यस, एंड दीज टू आर ऑल्सो इक्वल, तो इट इज 5/p plus 8q is equal to 2/2q minus p plus 1. Now just cross multiplying, what I will get, 4p plus 4 will multiplied with this whole, so 4p plus 32q, 4 would be 32. Similarly 5 is multiplying with this whole, 5 to the 10p plus 35q, and here if I cross multiply 5 this whole term, it will become 5 to the 10q minus 5p plus 5 is equal to 2p plus 16q. ये 8q था, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2p plus 16q. ओके, 2p plus 16q. ओके स्टूडेंट, अगर 10p को इधर ले जाएं और 32q को उधर ले जाएं तो 4p minus 10p ये बन जाएगा माइनस का 6p. ओके, एंड 35 minus 32 विल बिकम plus 3q. क्लियर? एंड ऑल्सो इधर सेम चीज किया जाए, 16 को इधर लेके आए तो 10q minus 16q बन जाएगा आपका माइनस का 6q, एंड माइनस 5p जब उधर जाएगा तो प्लस 2p में ऐड होके बन जाएगा ये 5p प्लस, एक मिनट सॉरी, माइनस 6q, 2p minus 5. ओके, 2p minus 5, we don't have 5p, 2p plus 16q, 5 to the 10q minus 5p plus 5. Okay, let me check. 10q minus 16q minus, okay, 2p plus 5p, it was 2p. इतना छोटा लिखा कि विजिबल नहीं हुआ. ओके, सो इट इज minus 6q and 5p plus 2p will become 7p. So it is 7p minus 5. सी स्टूडेंट, कुछ नहीं किया है, ये 16q को इधर लेके आए हैं तो 10q minus 16q minus 6q हो गया, ये minus 5p उधर गया राइट हैंड साइड में तो 2p plus 5p 7p हो गया, और ये plus 5p उधर जाके minus 5 हो गया. सो से इट्स योर minus 6p is equals to 3q. That means p is equals to minus 3
upon 6q. Okay, 6q, or the value of p is minus half q. Clear? And यहाँ पर minus 6q was equal to 7p minus 5. Minus 6q was equal with the 7p minus 5. Okay. See student, now what we have now? P is equals to minus half q. Say it is your equation number 3, and it is equation number 4. We have actually the two equations and two variables. Okay. P is equals to minus q by 2, yeah, minus half q. This is a linear equation, na? This is also a linear equation. Now we can easily solve just by substituting the value of p, or when whatever you want. Okay, you can eliminate also, but here because we have calculated p in terms of q, so we will substitute directly in equation number 4. So substituting substituting p in equation number 4. So minus 6q is equal to 7 times the value of p is minus half q minus 5. Okay, so minus 6q. This whole term when comes in the right left hand side, it will become positive. So it is plus 7 by 2q. Okay, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7 को माइनस हाफ से, ये बन गया माइनस 7 बाई 2, इधर आके प्लस का 7 बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 5. ओके, taking 2 LCM, I will get minus 12q plus 7q is equals to minus 5. 7q minus 12q बनेगा माइनस का 5q पॉइंट is equal to minus 5. डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, q is equal to 2. So the value of q is 2. Now for calculating p, putting in again 3, putting in equation number 3. So p is equals to minus half into q. 2 are cancel out, so the value of p is minus 1. So yes, we got our answers. The value of p is half, and the value of p is minus 1, and the value of q is plus 2. Okay, students, now I am giving some questions for you. Okay, we will have more question on this concept in the next class. Okay, now first of all I am giving question to you. Similar type of question. For what value of a and b, for what values of a and b given system will have, given system of linear equations will have infinite solutions. Similar type of question I am giving will have infinite number of solutions. Okay, our question is 2x minus 3y is equal to 7, and a plus b times x minus a plus b minus 3 times y is equal to 4a plus b. Students, don't do mistake while taking b1 and b2. Okay, they both are negative. So minus 3 upon this whole with negative term, this complete is with negative sign, so minus minus will get cancelled out. Okay, so this is a question for you, the similar kind of question, a very important question. This kind of questions do come in our examination. Okay, giving you one more question. Okay, what was our last topic? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर. तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर थी, उस पर आपको क्वेश्चन दे देता हूँ. ओके,
इस पे तो ये क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ, हम लोग इस टॉपिक पे और क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो देखे हैं कंडीशंस फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले। ओके, अभी देखना बाकी है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उस कंडीशन पे भी बन सकते हैं जिसमें हमने दोनों को यूनिक सॉल्यूशन, और एक केस में नो सॉल्यूशन वाले केस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वहाँ पर कुछ इनइक्वालिटी यूज करेंगे हम, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी करेंगे। ओके, बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने बेस्ड ऑन दी reducible, you have to solve these questions. See, one is x plus y is equal to 1 upon 2x minus 1 upon y is equals to -1. Okay, this is one equation, and the other one is 1 upon x plus 1 upon 2y is equals to 8. x not equal to 0, y not equal to 0 ना, x y की वैल्यू 0 0 नहीं हो सकती। सिमिलरली 2 by x plus 2 by 3y is equal to 1 upon 6, and the next equation is 3 upon x plus 2 upon y is equal to 0. 2 upon y is equal to 0, and this is the last one. A very good question. 1 by 2 times 2x plus 3y in the denominator 12 upon 7 times 3x minus 2y is equal to half. It is your equation number 1, and the next equation is 7 upon 2x plus 3y plus 4 upon 3x minus 2y, 3x minus 2y is equal to 2. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ दोनों इक्वेशन में ऐसा सेम होगा जिसको कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। देखा जाए तो यहाँ पर 1 अपॉन 2x प्लस 3y जो है वो दोनों में ही सेम है, तो हम 1 अपॉन 2x प्लस 3y को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, वेयर 2x 3y मस्ट नॉट इक्वल टू 0, and also 3x minus 2y not equal to 0. Denominator cannot be 0. Okay students, so आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। Solve these questions. इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली कंप्लीशन पे है अगर न्यूमेरिकल की बात करें पोर्शन की, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है अब वर्ड प्रॉब्लम्स। हम डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम 2 इक्वेशंस में फॉर्म करेंगे। ओके, डेली लाइफ से मतलब मेरा मतलब है जो वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, किसी एज रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी क्वेश्चन होंगे। मतलब मैथमेटिक्स को हम कैसे ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का, कैसे हम उसको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो हम अब देखेंगे। ओके, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट उस पार्ट के लिए जो बेस है वो रेडी हो चुका है अब। ओके, वहां पर अब केवल एप्टीट्यूड चाहिए इक्वेशंस फॉर्म करने का। इक्वेशन सॉल्व करना हमारे को बहुत अच्छे से आता है अब। ओके, हमको पता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा हमने ये भी सीख लिया कि अगर इक्वेशंस रिड्यूसिबल हो तो कैसे उसको रिड्यूस करके लीनियर बना के सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब हमारा जो टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर वो एक ही टॉपिक बचता है, वर्ड प्रॉब्लम्स, और नेक्स्ट लेक्चर से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे। ओके, so till then take care, enjoy, bye bye.